Assalamu alaikum everyone and Bakhair Raklat. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है Mibro Watch C4 that I got from phonepro.pk and the price of this watch is 7500 PKR. This watch also supports Bluetooth calling but it has an LCD 60Hz display. Let's find out if it's worth 7500 Pakistani rupees. But before that, if you're new to the channel को subscribe करना मत भूलिएगा. Let's get into it. Mibro Watch C4 is an entry-level watch from Mibro. बॉक्स पर प्रोडक्ट इमेज एंड ब्रांडिंग है एंड साइट्स पर स्पेसिफिकेशंस। इनसाइड द बॉक्स आपको वॉच के साथ एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलता है एंड एक यूज़र मैनुअल। वॉच एक रेक्टेंगल शेप डिज़ाइन में है एंड वॉच का फ्रेम जिंक अलॉय मेटल का बना हुआ है, जबकि वॉच का लोअर हाफ प्लास्टिक से बना है। बैक साइड पर सेंसर के ऊपर प्रोटेक्शन भी प्लास्टिक है। यू ऑल्सो गेट अ स्पीकर ओपनिंग एंड ऑन द अदर साइड देयर इज़ अ माइक बिकॉज दिस वॉच सपोर्ट्स ब्लूटूथ कॉलिंग। अदर देन दिस आपको चार्जिंग पिन पॉइंट्स मिलते हैं एंड आपको साइड पर एक रोटेटिंग क्राउन मिलता है जो कि सिर्फ ऑन ऑफ एंड बैक टू होम का फंक्शन परफॉर्म करता है एंड क्राउन को रोटेट करने से ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, अनलाइक ऑन द मीब्रो लाइट 3 एंड द लाइट 3 प्रो। वॉच का वेट विदाउट स्ट्रैप 29 ग्राम्स है एंड विद अ सिलिकॉन स्ट्रैप इट्स 45 ग्राम्स। यहाँ पर भी आपको 2 ATM का वाटर रेजिस्टेंस मिलता है जस्ट लाइक द मीब्रो लाइट 3 एंड ये वॉच सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है, so it cannot be used inside deep water. The display is a 2.01-inch TFT screen with 240 x 296 resolution and 60 Hz refresh rate. Screen to body ratio इसका 81.7% है with a pretty noticeable chin. Other than this, viewing angles मुझे इसके अच्छे नहीं लगे. Since it's an LCD display, so device को tilt करने पे इसका display ठीक colors नहीं देता. डिस्प्ले में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही टैप टू वेक का एंड ना ही कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है बिकॉज इट्स एन LCD पैनल। एनी हाउ डे लाइट विजिबिलिटी ठीक है इसकी अंडर डायरेक्ट सनलाइट एंड आई वुड से इट्स नॉट बैड एट ऑल, बट द कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द डिस्प्ले aren't very appealing and the display feels pretty pixelated due to low resolution. Anyhow, you can keep the screen on for a total of 20 minutes if there is a need. And also screen पर palm place करने से ये sleep mode में चला जाता है। वॉच का ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है and besides the shape and display it's very similar to the Mibro Lite 3 in terms of specs and it's running on the same proprietary OS. In case if you haven't watched my reviews of the Mibro Lite 3 and the Mibro Lite 3 Pro, so do check them out. Now what you can pretty much do with this watch is that you can dial a number through the watch dialer, you can add 20 contacts to the watch through the Mibro Fit app. इसके अलावा you can cast phone's audio directly to the watch if your phone is connected to the watch. But at times जब फ़ोन का ऑडियो वॉच पे स्विच ना भी हो, still often times फ़ोन का मीडिया खुद फ़ोन पर प्ले हो जाता है, which is possibly a software glitch. ANC और ENC किस तरह से और कहाँ-कहाँ पे काम करते हैं, इस वीडियो में हम इन टर्म्स पे डिस्कशन करेंगे, आपकी कंफ्यूजन कंप्लीटली खत्म हो जाए। बट बिफोर दैट अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब को एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। बाकी दिस वॉच doesn't have a built-in GPS or a barometer and this watch also doesn't have a gyroscope. इसके अलावा NFC support भी इस वॉच पर मिसिंग है। In order to make this watch work, you have to connect it to the Mibro Fit app. And once you connect it to the app, so the app interface looks like this. Since मैंने वॉच के UI को and Mibro Fit app के UI को काफ़ी डिटेल से Mibro Watch Lite 3 Pro के रिव्यू में एक्सप्लेन किया है and the interface on Mibro Lite 3, Mibro Lite 3 Pro and the Mibro Watch C4 is similar, so I'll skip this part. अब अगर हम सेंसर्स की बात करें तो यूजुअली रेस्टिंग हार्ट रेट को ये ठीक से रिकॉर्ड करता है, बट स्पाइक्स एंड डिप्स इन हार्ट रेट ड्यूरिंग वर्कआउट्स को ये ठीक से मेजर नहीं कर पाता and it gives you unusual heart rate stats during workouts, which makes it not very reliable as a workout tracker for measuring heart rate. However, the SpO2 monitor works fine most of the times when you try to check your blood oxygen level in resting state. But I'm not sure कि altitudes पे कितना efficient and reliable है if you take it on a hike with you, or if you test your blood oxygen during medical condition. But remember, this is not a medical device and the results of these devices should not be considered for treatment of any medical condition whatsoever. Sleep monitor मुझे इसका reliable नहीं लगा and it wrongly recorded my sleep and awake time. I tested it alongside Xiaomi Band 9, which at least records the sleep and awake time correctly, if not the deep sleep and the REM sleep stages.
The Mibro Watch C4 under-recorded my sleep by almost 1 hour and 40 minutes, which makes it an unreliable sleep tracking device. To test the pedometer, I wore the Mibro Watch C4 alongside Xiaomi Band 9 and Huawei Watch Fit 2. And after 10 minutes of workout, the distance recorded on the Mibro Watch C4 was 0.78 kilometers, whereas the distance recorded on the Huawei Watch Fit 2 was 0.69 kilometers. And the Xiaomi Band 9 recorded a distance of 0.76 kilometers, which is close to the Mibro Watch C4. However, the steps recorded on the Mibro Watch C4 were 988, and the steps recorded on the Huawei Watch Fit 2 were 1030. And the Xiaomi Band 9 recorded 984 steps, which makes it very close to the Mibro Watch C4 in terms of step count. The Mibro Watch C4 features a 350 mAh battery. This capacity typically provides up to 7 to 10 days of usage on a single charge, depending on the usage patterns and features enabled. So expect around 5 days of battery life if you're a heavy user. Anyhow, it takes around 2 hours to fully charge from 0 to 100. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।